This is Dr. Shikha Lal, and today we are going to talk about swimming and the injuries that may happen during swimming. So swimming में basically 4 strokes होते हैं, butterfly, freestyle, backstroke, breaststroke. breaststroke oldest stroke है और उसमें minimum injuries होती हैं. बटरफ्लाई में मैक्सिमम इंजरीज होती हैं फॉलोड बाय फ्रीस्टाइल स्ट्रोक, और यही 2 स्ट्रोक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एलीट स्विमर्स में. सो स्विमर्स में सबसे ज़्यादा आपको शोल्डर की प्रॉब्लम्स दिखेंगी. हालांकि बटरफ्लाई स्ट्रोक वालों में बैक की प्रॉब्लम्स भी आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव आर्चिंग. नाउ व्हेन वी आर स्विमिंग देयर आर फ्यू स्टेजेस. So the first thing that you should notice is how their arm is entering the water. अगर आपका जो swimmer है, आपका arm entry instead of being close to the body, they are keeping it little wide, जिसे हम wider arm entry कहते हैं. That is your first sign. The second sign is that when they are swimming inside and they are pulling the arm back so as to move the body forward. तो इसमें usually, ideally, you should keep the arm closer to the body. But if they have a painful shoulder, they might want to keep it a little far away. So then again, there is a wider pull through. Third thing that you might notice is the rotation. In a freestyle, when you are pulling, your body has a tendency to rotate to the opposite side. Now, ideally, 30 to 40 degree of trunk rotation is necessary और it is required ताकि आप forward propel कर सकें. If the swimmer is rotating more or even less, that might cause your shoulder to get injured. Fourth is something what we call as catch-up. Now, if you notice, swimming में क्या होता है? Alternate arm movement होता है. एक recovery से वापस आ रहा होता है, पानी के ऊपर होता है, और एक पानी में नीचे जा रहा होता है. तो ये एक alternate movement है. अगर किसी स्विमर को पेनफुल शोल्डर है, व्हाट दे माइट डू इज दे माइट ओवरलैप द स्टेजेस, कि एक पानी के अंदर अभी जाने की तैयारी में है जिसे हम कहते हैं लेट रिकवरी, और अभी एक अर्ली पुल थ्रू में है, मतलब कि इस तरह वो ओवरलैप हो रहा है इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑपोजिट. फिफ्थ थिंग दैट दे माइट डू इज दैट द रिकवरी माइट नॉट बी वेरी स्मूथ. The recovery has to be led with your elbow, but it is not necessary कि आपका जो elbow है वो 90 डिग्री पे हो या बहुत close हो. You can do recovery keeping the elbow slightly flexed instead of fully bent. Fifth thing that you should notice is whenever you are doing the propulsion, you have to keep your fingers pointed down and the palm facing backwards. If you are also during the recovery or during the pull through, if you are flicking the wrist, then you are not going to be able to propel forward in the least efficient way. That might lead to more force generation and more injuries. Shoulder में जो होती है आपकी इंजरी, वो सबसे ज़्यादा होती है हाइपर एक्सटेंशन की इंजरी, मतलब कि रिलेटिवली आपका शोल्डर आपकी बॉडी के ज़्यादा पीछे है. अब इस इंजरीज को अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको प्रॉपर मसल एक्टिविटी की भी ज़रूरत है. तो जब आप पुल थ्रू स्टेज में हैं, अगर आपका ये शोल्डर ब्लेड आगे की तरफ प्रोट्रैक्टेड नहीं है, पीछे रहेगा, तो आपको फोर्स जनरेशन ज़्यादा चाहिए होगी. इसीलिए एलीट स्विमर्स में देखा गया है जो कि फ्री स्टाइल करते हैं, दैट देयर 2 muscles, serratus anterior and subscapularis, fires 20% more than the rest of the muscles. Yes, lats and pec major are the main muscles which fire, but activation of your serratus anterior and subscapularis is also equally important. Hence, we suggest that all the swimmers जो कि freestyle swimming करते हैं to strengthen these 2 muscles, which we are going to show in our future videos. Also, remember कि swimming में already आपका जो shoulder होता है वो ज़्यादा lax हो जाता है. So instead of focusing on shoulder stretches, you should focus on stretching your lower body. Please watch the further videos to understand a proper warm-up that can be done by a swimmer to prevent injuries, and the strengthening that they can do to make sure that they are swimming efficiently without injuring themselves. Thank you.